Hi everyone. So I am back with another guest, and it's been a while. I was a bit under the weather, और तकरीबन 2-3 हफ्ते से कोई episode नहीं आया था. But today I have with me Adil Saad. Adil and I know Adil from my work last year, and we have a lot of mutuals as well, and we have connected over the past year. And before I begin, I would just like to say that today we don't have any set agenda for now. हम बातें करना शुरू करेंगे and then let's see where do we go. Adil is right now in Karachi and doing a lot of wonderful things. So let's start with one of those things. Adil, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. How are you, Sherry? I'm good as well, and बस मेरी आवाज थोड़ी सी खराब चल रही है. That's something I'm not really proud of. Okay, so Adil, right now you're part of the startup which you've just joined, which has something to do with automobiles. और क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में एवरी ग्रोइंग टीनेजर 18-19 साल की उसका उसका ड्रीम होता है कि उसको एक सिविक लेनी है. सो लाइक जस्ट एक्सप्लेन, लाइक थोड़ा सा अगर आप बता सको कि आप अभी कर क्या रहे हो, लाइक व्हाट इज ओके कर ऑल अबाउट. Okay, perfect. So, wait, once again, Assalamu alaikum, Sherry, and everybody else. That was a wonderful introduction. Okay, Kar, basically, it's a startup which is sort of like Food Panda for cars. So, if you Okay. have to order something, for example, if you want to have OPTP, and you don't have to get up and go to OPTP yourself. वो अलग बात है कि you can always call OPTP के delivery, but आप Food Panda खोलते हो, and Food Panda has a range of multiple products to offer. ठीक है. Now, OKCar का उससे basically ये कि OKCar is a one-stop solution for your car maintenance services. आपकी गाड़ी का कोई भी मसला होता है, आपकी गाड़ी अचानक चलते हुए खराब हो जाए, या आपकी गाड़ी का अचानक खासा एक्सीडेंट हो जाए, या ये कि जो है वो अपना आपको जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है, जो आप ऑयल चेंजेस वगैरह कराते हैं तो वो करवाना हो, तो फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो yourself to the workshop or to the 3S dealership and get the job done. What you can do is just call us up. मेरा मैकेनिक आएगा आपके घर पे, इस मौका गाड़ी को डायग्नोज करेगा. इफ इट्स समथिंग जो कि घर पे ही हो जाए, इज गोना गेट द जॉब डन एट योर हाउस ऑन लाइक legitimately आपके गैराज के अंदर या पार्किंग के अंदर. If it's something that requires the car to be taken away to the workshop, so we currently have 80 plus workshops in Karachi जिनके साथ ने अच्छा, पार्टनर किया हुआ है. And सही. what they do is कि जो है वो अपना, if you live in Gulshan for example, तो गुलशन में जो हमारी करीबी वर्कशॉप है, they're gonna take the car to that workshop, they're gonna get the job done. फिर वहाँ जब once job is done, one of my mechanics is gonna go to that workshop, do a complete quality check and inspection. Once the QC is once the QC is done, वो गाड़ी आपके घर पे वापस डिलीवर हो जाएगी. अच्छा, so इस so just to yeah. just to so it's it do you guys have an app right now? Yeah, matlab, how does one approach you? Does one call you up, or does one contact you through an app, or how does that whole thing works? Like So, what's so we have two apps right now. ठीक है, एक तो हमारी जो मैकेनिक सेंट्रिक ऐप है. One of that is like जो तो इंटरनल ऐप है, उसका कोई एक्सेस नहीं होता टू द नॉर्मल कस्टमर. ठीक है. हमारी जो कस्टमर ऐप है वो डेवलप हो गई है. अब सिर्फ रहता है कि वो उसका एक बेटा वर्जन के अंदर है, उस पर मजीद भी डेवलपमेंट चल रही है. सो वी हैवंट रियली रोल्ड आउट दैट ऐप ऑन प्ले स्टोर और यू नो द गूगल स्टोर. अलबत्ता हमने उसका टेस्ट रन किया हुआ है उस ऐप के ऊपर जो हमारी इंटरनल टीम है, बिकॉज वन डे वी डिसाइडेड टू यू नो जस्ट गो टू अ बीटीएल एक्टिविटी. हम वी वर अ टीम ऑफ 25 पीपल. हमने उनको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया हुआ था. एंड फॉर दैट एक्टिविटी व्हाट वी डिड वाज कि हमने जो इतने ऑर्डर्स हम लोग एड हॉक ले रहे थे, हमने उनको थ्रू द ऐप जो है वो किया था, प्रोसेस किया था. सो अगेन द ऐप इज रेडी, डेवलपमेंट हो गई है, बस थोड़ी सी ट्वीकिंग रहती है, and it should be done in probably a month or so. So yeah. that's actually pretty interesting क्योंकि I think I saw one of your stories और उसमें मैं यही सोच रहा था. I've never been into cars. मतलब growing up मतलब मेरा बस चले मैं गाड़ी नहीं चलाऊँ अगर हमारा public transport इतना अच्छा हो, but खैर. But I saw that कि for instance my sister, right, she drives, she goes to work every day. अब हमारी स्पेशली कराची और पाकिस्तान के अंदर किसी को बोलना कि मैकेनिक के पास आपने गाड़ी लेके जानी है, तो मैं एज अ गाय भी मैं पहले अपने किसी एक दो दोस्त को कॉल करूंगा, भाई किसके पास जाऊं, मुझे कोई फजूल में मामू ना बना दे या मुझे कोई स्कैम ना कर दे, राइट. That's a very usual practice. But in your Hmm. case I saw कि like for instance someone works at Kareem या someone works at any other big company in Karachi and उसकी गाड़ी खराब हो गई है, अब all the way जाना है, सारा मतलब मसले हल करने हैं, that's not possible, right?
So you can, like, if we call you up, तो आप हमारी जगह पर आओगे या हमें गाड़ी आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट लेके जानी पड़ेगी? दो चीजें होती हैं। वंस अगेन वही बात है कि आपके जो गाड़ी का काम, गाड़ी में इटसेल्फ देयर आर मोर देन 300,000 कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हर पार्ट का जो रिपेयर है वो डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंसिटी का है। ठीक है, Okay. लेट्स मैं आपको एग्जांपल इससे देता हूँ कि जो प्रिवेंटिव काम होते हैं, अच्छा, एक होता है प्रिवेंटिव काम। प्रिवेंटिव इज के यू बेसिकली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ और मेंटेनिंग योर कार इन सच अ वे कि आपको कोई लंबा खर्चा ना निकले बाद में। फिर एक आता है नॉन प्रिवेंटिव। नॉन प्रिवेंटिव इसके खर्चा अब आ गया है, अब उसको आपने कहाँ फिक्स करना है। तो दो वर्टिकल आपके हो गए, प्रिवेंटिव, नॉन प्रिवेंटिव। अब इन दोनों में आपकी सब डिविजन आती हैं। प्रिवेंटिव नॉन प्रिवेंटिव में एक आता है प्रिवेंटिव होम रिपेयर आता है, प्रिवेंटिव वर्कशॉप रिपेयर आता है, एक आता है नॉन प्रिवेंटिव होम रिपेयर एंड नॉन प्रिवेंटिव वर्कशॉप रिपेयर। तो हम लोग अच्छा, इसको इस तरह से उसमें बेसिकली फर्दर जो है वो डिवाइड कैटेगरीज कर, हैं। सही। कैटेगरीज हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब आपकी लेट्स सपोज लेट्स जस्ट यू, आई रिमेंबर यू यूज्ड टू कम टू आवर ऑफिस बैक इन यूएस मोबिल। आप मीरा में आते थे, ठीक है। अब इट हम्म। वाज अ फेयरली न्यू कार, हम्म। और अब मीरा में वो इश्यूज नहीं आते जो कि एक 1997 की सिविक में है। ठीक है, सही है। तो आपको अपनी गाड़ी की जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है, जो जिसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस बोलते हैं, दैट बेसिकली मींस के आफ्टर एवरी 5000 किलोमीटर्स यू वुड वांट टू गेट द ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज। ये तो पीरियोडिक मेंटेनेंस है। यू बेसिकली हम्म। preventing your car's engine from further damage by changing the lubricants on a timely manner. फिर हम्म। आपका आता है कि जो है वो अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में और क्या आता है आपका, गाड़ी की वॉश आती है, इंटर क्लीनिंग आती है, अंडर कैरेज ऑयल आता है। आपको लेट्स सपोज आपकी जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके एक्सेल आवाज कह रहे हैं, अक्सर ये होता है आप गाड़ी की जब स्टीयरिंग मोड़ते हैं और चलाते हैं तो एक कट 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 की आवाज आती है। वो कट 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 क्या होता है, आपका जो एक्सेल बुश होता है वो बुश कट जाता है, बुश के अंदर ऑयलिंग हुई होती है। ठीक है, एंड दैट हैज केयर, जब आपकी मिट्टी गई है उस बुश, कटे हुए बुश के अंदर, तो वो ऑयल के ऊपर अब जाके मिट्टी जो बतना शुरू हो गई। अब वो जब फिर जब गियर आपका मूव करेगा तो वो इंस्टेड कि वो स्मूथली मूव करे, अब वो कट 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 की आवाज करेगा। तो बुश भी घर पे चेंज हो जाता है। तो ये सारे वो काम है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ओके। नहीं है। ओके। So, मैं एग्जैक्टली इसी के समझ, so whatever हाँ, can be fixed at your place upon your own convenience वो घर पे हो जाएगा। या And obviously whatever needs, लेट्स से अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल को रेफर करते हो तो वो घर पे जितना आपका हाँ इलाज कर सकता है कर देगा, लेकिन एक टाइम पे आके हाँ, बोलेगा नहीं भाई मुझे मशीनरी चाहिए, मुझे वापस अपने अब हॉस्पिटल मुझे लेके जाना। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके लिए। It's एग्जैक्टली, exactly like that. नहीं, ये this is actually very interesting क्योंकि I've lived in Karachi all my life, और मैं जब भी किसी गाड़ी का काम हुआ है तो मैं किसी ना किसी के थ्रू या घर के किसी बंदे के साथ या अब्बू ने किसी को रेफर कर दिया, किसी दोस्त का कोई जानने वाला है उसके साथ चला गया। इस चीज को ऑटोमेट करना इतना जरूरी है क्योंकि माशाल्लाह से हमारे लोग गाड़ियों के मामले में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जगह है नहीं गाड़ी चलाने की, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। वो इक्विलिब्रियम मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो क्या होगा जिस हिसाब से हमारी व्हीकल्स यूज हो रही हैं। खैर वो हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर हो सकता है, बट वन मोर थिंग, हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, इफ यूर अ गाय, इफ यूर लाइक 19 20 21, a lot of people assume कि भाई आप जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हो ना, आपको इसका A to Z पता है। सही है, आपको हर चीज पता है, आप ना बाप हो इस गाड़ी के, विच इज नॉट ट्रू। एंड आई नो yeah, अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मेरी गाड़ी अभी कोई और यूज करता है कराची में, लेकिन आई नो कि उस बंदे को मुझसे ज्यादा पता होगा कि उस गाड़ी के बारे में, मुझे इतना नहीं पता था, मुझे कभी भी गाड़ियों का शौक नहीं था। सही हाउ है। डू यू हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप ना, कि यार मतलब हमारे यहाँ गाड़ियों के मामले में जिस बेचारे को कुछ नहीं पता होता वो या तो स्कैम होता है, या उसको वो अपनी गाड़ी लेके जाता है, वो एक एवरेज 9 to 5 बंदा है, उसको पता नहीं इधर उधर राइट लेफ्ट चीजें फिक्स करके उसका बिल कोई 80 90 हजार, आप ये भी लगवा लें, आप ये वाला सिस्टम भी लगवा लें, आप ये भी लगवा लें, मतलब क्योंकि I know people who have been part of the automobile industry, so I know a bit about it. What do you have to say on that? क्योंकि ठीक है वर्किंग क्लास है हमारी, जो भी ये गाड़ियां बनाती है और ये सब करती है, लेकिन रिप ऑफ करना इनको भी आता है, स्पेशली अगर वो कोई सही। महंगी गाड़ी देख लें, 20 30 लाख की गाड़ी देख लें तो वो, मतलब हम्म। 2 3 लाख की दिहाड़ी तो फिर उनको बनानी है उसकी, उसके ऊपर ना। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, इससे होता ये है कि लेट्स सपोज एक बंदा है जिसको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, एंड लेकिन उसको ये जरूर अंदाजा है कि मेरी गाड़ी में कुछ ठीक तो नहीं है, आई थिंक कोई आवाज आ रही है, कोई चीज अनयूजुअल हाँ। है, कुछ बिजार है। ठीक है, अब उस बंदे को ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ पे करे कि क्या चीज़ है। तो वो करेगा क्या, एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, वो बाजार जाएगा, बाजार में डिफरेंट
अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक ही मैकेनिक के पास नहीं जाते या 2-3 मैकेनिक के पास जाते हो जस्ट टू फिगर आउट कि वो क्या है, क्योंकि एक मैकेनिक आपको बोलेगा कि बहुत छोटी सी मिसाल है जो कि इतना अब कॉमन हो गया है, इनफैक्ट कराची में अब ये बहुत होगा, अब गर्मियां शुरू हो गई, ठीक है, हम्म, अब जिसकी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा वो हम्म, जाएगा मैकेनिक के पास पहले कि यार एसी नहीं काम कर रहा। हम्म, अब क्या पता सिर्फ और सिर्फ मसला ये हो कि सिर्फ एसी की गैस नहीं है, जो हम्म, कि 1500 से 2000 रुपये का खर्चा है मुश्किल से। आपने गैस रिचार्ज करनी है, योर एसी इज गोना बी एज गुड एज न्यू। लेकिन चूंकि उस बंदे को नहीं पता, और चूंकि उस बंदे की बातों से भी मैकेनिक को अंदाजा हो जाएगा कि ये तो गाड़ी के मामले में डफर है पूरा का पूरा, वो उसको बोलेगा सर आपकी गाड़ी का एसी तो खत्म है, नया कंप्रेसर आएगा, नया कंडेंसर आएगा, नई गैस रिचार्ज होगी, पूरा अंदर का यूनिट चेंज होगा, आपका खर्चा हो गया 40,000 रुपये का हो गया। अब आप हो जाओगे परेशान कि यार हम्म, अब ये तो बड़ा बैड सीन है। फिर हम्म, आप उसी तरह जाओगे बराबर वाले मैकेनिक के पास, वो आपको बोलेगा कि नहीं ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ गैस का मसला है, 2000 रुपये की गैस है, यू गुड टू गो। अगर आपने पहले काम करवा लिया होता 40,000 रुपये वाले बंदे से, तो इट वुड हैव बीन अ ह्यूज लॉस। ठीक है, तो द स्मार्ट प्लेस की जगह आप एक दो बंदों से पता करो। अब हमें ये फायदा ये है कि मौके का क्या फायदा है, आपको पता है आपकी गाड़ी किसी काम नहीं कर रहा, आपने मुझे कॉल की हमारे नंबर के ऊपर, आपने बोला भाई इस तरह से मेरी गाड़ी किसी काम नहीं कर रहा, कोई मैकेनिक भेज दें जो कि इसको डायग्नोज कर ले। मेरा मैकेनिक आएगा आपके पास, उसका एसी डायग्नोसिस का एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, वो आप बेयर करोगे, डायग्नोसिस के बाद वो आपको बता देगा कि भाई आपकी गाड़ी में ये इश्यूज हैं और इसका ये जो है वो हल है। अब वो ओके, इतना ट्रांसपेरेंट होता है वो कि हम आपको वंस द डायग्नोसिस इज डन, वो जो हमारा, अब हम लोग अपने मैकेनिक्स से बोलते हैं गुरु, मिस्टर करीम ड्राइवर होते हैं, कैप्टन होते हम्म, हैं, हमारे हम्म, गुरुज होते हैं। हम्म, मेरा गुरु जो है वो हमारा जो अपनी ऐप पे डालेगा पूरा वॉइस नोट डालेगा, वो वॉइस नोट मेरे पास आएगा, फिर जो हमारा लड़का एडमिन के लोग जो होते हैं जो इंक्वायरीज बना रहे होते हैं वो उसको सुनेगा, वो उसको पूरा नोट डाउन करेगा कि मेरे मैकेनिक ने ये चीजें बोली हैं, उस हिसाब से फिर वो आएगा ऑपरेशंस के पास। ठीक है, ऑपरेशंस में बैठे हुए डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जिनको हम्म, पता है कि भाई गाड़ी में क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैकेनिक को भी किस तरह की, क्योंकि मैकेनिक की जुबान होती है, मैकेनिक की हाँ, जुबान को किस तरह हाँ, आपने इंटरप्रेट करना है उसको पता है, क्योंकि उसने उस पर काम हाँ, किया हुआ है। हाँ, फिर वो दैट्स ट्रू। पूरी कोटेशन बनाएगा, कोटेशन बनाने के बाद वो कोटेशन पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे जब ओके, आपने कोटेशन देखी, आपने सारी प्राइसेस देखी, आपको जब समझ आ गया कि हाँ ठीक है गुड टू गो, तभी जाके मैं काम करूंगा आपकी गाड़ी पे, और आपकी जितना भी काम हुआ मैं आपको उस कोटेशन से 1 रुपये ऊपर चार्ज नहीं करूंगा। ओके, एंड दिस इज, ये तो एक मतलब कि एक छोटा सा एक ट्रस्ट फैक्टर आ गया जो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे ऊपर कि हमें जो डायग्नोज किया है वो ठीक है, क्योंकि सही है। अगेन वी ऑब्वियसली मतलब वो हैव, तो आपको हाँ कहीं भी आप जाते हो फॉर एनी एनी रिपेयर या एनी केस, तो ये तो जरूरी है। बट दिस बिल्कुल साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक और चीज मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इसकी डिमांड जो है कराची जैसे शहर के अंदर, जहाँ मतलब आई डोंट नो लेट्स से लाइक एटलीस्ट 5 मिलियन व्हीकल्स, मतलब आई थिंक 5 मिलियन, मतलब इससे ज्यादा ही होंगी, मतलब मोर देन सिक्स मोटरसाइकिल्स। मिलियन हाँ। हाँ मतलब ऑलमोस्ट इतनी इतनी गाड़ियां हैं। हाँ and फिर you have बारिश, you have गर्मी, you have a heat wave, you have बड़ी वेल टू डू सड़कें, तो मतलब वो उसके अंदर गाड़ी बिल्कुल मतलब someone like me who is not into cars at all, मेरा कॉन्शियंस मुझे कभी इजाजत नहीं देगा कि मैं महंगी गाड़ी कराची में चलाऊं। दैट्स लाइक जो ऑल जो ऑफ माय बात है फ्रेंड्स हाँ। नो दैट, माय फैमिली नोज दैट। मतलब मेरा बस चले, बस मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आई वुड नेवर, मैं कभी किसी गाड़ी पे ऐसा जुल्म नहीं करूंगा कि मैं उसको कराची के अंदर सिटी एरियाज में या पब्लिक एरियाज में या डाउनटाउन कराची के अंदर वो गाड़ी चलाऊं। But this बिल्कुल is very, yeah, this is interesting. So we've talked about what you're doing right now. Again, I want to हाँ। talk a bit about your journey so far. So you graduated from NED, and ऐसे during your studies, you also were a part of, let's say, a very बड़ी hip organization मतलब मानी जाती है ISEC in that way, and a lot of people want to join it. And you were also part of other community initiatives as well. I guess something to do with counter extremism or counter terrorism or something like that as well. So I want to talk या about that, and then we can go to the third part, which is the Italy wala pura episode. And like if you want to ओके, talk about the community thing आई and एम फाइन विद दैट या। so ओके, how's सो that? I did my O levels from Beacon House. Yeah, My father was in the army, तो हम लोग बहुत मूव करते थे all over Pakistan. yeah.
That's I another joined story to tell as well, क्योंकि I know that someone who's from the army, उनका तो मतलब पूरे पाकिस्तान का जो पूरा एक एक पूरा उनको एक्सपोजर होता है वो, हाँ. हाँ. So I joined Beacon House when my father was posted in Peshawar. उसके बाद we moved to Karachi. मैंने अपने O levels फिर Beacon House से ही किया. After that, I wanted to go to Lyceum, but my father did not let me go to the Lyceum because he had his own reasons. ठीक है, वो अलग पूरा एक debate है. So I ended up joining St. Patrick's High School. ठीक Okay. है. St. Pat's के बाद ये था कि अच्छा for me मेरे लिए मेरा ना एक होता है ना, एक ड्रीम कॉलेज, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी, वो थी जीआईके, जी की जिसको बोलते हैं. Okay. And I also got an admission in GIK as well when I was done with my A levels. और मैंने इस तरह से किया था कि मैंने कहीं जानबूझ के मैंने टेस्ट फेल किए थे. लम्स का मैंने फेल किया था, मैंने नर्स का मैंने फेल किया था, मैंने आईबी का मैंने फेल किया था, क्योंकि मुझे Yeah. पता था मैंने जीआईके ही जाना है, और मैंने जीआईके में एडमिशन हो भी गया था. सही है. एंड एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा था, वो हबीब का ग्रेजुएट है, उसने मुझसे कहा था यार आदिल हबीब का टेस्ट दे दे, क्या जा रहा है यार कराची में, दे दे. मैं ठीक है, मैंने हबीब का टेस्ट दे दिया. सो आई आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम हबीब विद अ स्कॉलरशिप. नाउ व्हेन आई हैड दीस टू ऑप्शंस, my GIK or Habib, my parents collectively did not want me to leave for GIK क्योंकि probably because I am the only son. तो उनकी एक sort of attachment थी कि अभी से ना चले जाए, तुम पहले मास्टर्स के लिए बाहर चले जाना, अभी मत जाओ. So I ended up going to Habib, and Habib जाने के बाद फिर ये था कि since Habib was not my first choice of action, तो फिर मैंने क्या किया कि जब अपना एनईडी खुली, एडमिशन खुला, मैंने एनईडी अप्लाई कर दिया, मैकेनिकल मेरा हो गया. And This that's when is I switched to this mechanical. is actually, पता है मैं यही सोच रहा था before I was researching for this episode कि मतलब मैं मतलब Yeah. किस तरह के सवाल पूछूंगा. And so the whole idea of my podcast या on my channel is कि I don't focus on the topic. जैसे मेरा focus गाड़ियाँ नहीं है, मेरा focus university, मेरा focus बंदे की personal story है. And that's why whoever I call in, मैं उनको ये बोलता हूँ यार आपकी जो personal story है ना, आपने मतलब आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि सपोज अगर आप बीकन हाउस नहीं जाते, आप सपोज लाइसेम चले जाते, अगर आप लाइसेम चले जाते, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एंड अप करते, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एंड अप करते, मैं और आप लास्ट ईयर साथ काम नहीं कर रहे होते. सो बिल्कुल ऑल ऐसे ही, हाँ. ऑफ दिस इज लाइक पार्ट ऑफ क्या कहते हैं कंटिन्यूम है चीजों का जो चलता रहता है. like I still remember when I was applying for my masters, and I did talk to you about it as well, and at that time I was super confused, and since we used to work at night, and मैं सुबह सुबह सारी रात के बाद, आई थिंक रमजान के अराउंड, नहीं रमजान के बाद या मतलब मई के अंदर मैं सारी रात काम करता था, और सुबह आई यूज्ड टू गो टू दिस प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं वहाँ लैपटॉप खोल के ना अप्लाई कर रहा हूँ जी फलां जगह डसलडॉर्फ जर्मनी, इधर उधर पता नहीं कहाँ अप्लाई कर दिया ना, नाम भी नहीं पता जगहों का. And the conversations I had at that time with my coworkers, with my friends, with my peers, उस सब का एक खिचड़ी बन के ना अब मैं यहाँ पर आया हूँ. Like it's हम मतलब I think it's one step leading to another ना. मतलब अगर मुझे कोई बोल देता वहाँ पे जी फलां जगह अच्छी है, फलां जगह स्कॉलरशिप मिल रही है, वहाँ अप्लाई कर दो, मैं कर देता, मेरा हो जाता, मैं क्या पता वहाँ चला जाता. So Yeah. it's all about that. And like connecting that point, I want to talk about, I applied to Fulbright scholarship in 2020, in the fall of 2020, and तकरीबन मैंने यूएस मोबाइल में आई थिंक काम शुरू कर दिया था, तब हमें पता चला कि द फुल ब्राइट लास्ट ईयर विल नॉट टेक एनी गाइस फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो ग्लोबल साउथ है, एंड दे ओनली अच्छा. अवॉर्डेड वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन, लाइक 20-30 वुमेन, दैट्स इट. वो मतलब कहाँ वो 150-200 लोग लेते थे, उन्होंने सिर्फ 20-30 लोगों को लिया. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे भी लाइक इरास्मस और चेवनिंग और फुलब्राइट के नेटवर्क से मिलता हूँ, उनसे कनेक्ट करता हूँ. That was being rejected, right? And that is how मतलब आपको एक rejection आ गई है, मतलब आपका एक plan होता है कि यार. And I want to talk about rejections, not only like scholarship rejections, we can talk about job rejections as well, क्योंकि I feel like कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर ना how to handle a rejection ना, मतलब मतलब हम में भी नहीं है, हम कोई मतलब कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, बट आर्ट नहीं है हमारे यहाँ लोगों के अंदर. हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार अगर एक जगह सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है. सब्र नहीं है, और दूसरा हमारे यहाँ है कि उनको फिर रिस्क नहीं लेना. उनको पता है यार एक जगह हम काम कर रहे हैं,
कल को कहीं और जाएंगे, फजूल में वो सीन नहीं बना, रिजेक्शन हो गई, ये सब हो गया, तो दे पहली बात दे इन सॉर्ट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, और दूसरी बात व्हेन आई केम हियर आई वाज टॉकिंग टू पीपल कि यार मास्टर्स का क्या सीन है, नहीं है, एंड दे लाइक यार मतलब यार हम ना अभी ये जो चीज कर रहे हैं ना ये सही है, अभी हमें ऑल द वे मतलब कहीं और जाना, एक नई लाइफ स्टार्ट करना ना, वो मतलब नहीं कर सकते हम। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि लाइक व्हेन यू व्हाइल यू आर वर्किंग, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बैचलर्स करते हैं, एक साल नौकरी करते हैं और फिर मास्टर्स का सोचते हैं, तो हाउ डज दैट वर्क यार? आप काम भी कर रहे हो, आप मास्टर्स का भी सोच रहे हो, आप आगे की लाइफ भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि 23 24 अंटिल यूर 30 ये बड़ा, आई वुड से बड़ा गंदा टाइम होता है फॉर, हाँ, एंड स्पेशली बहुत स्ट्रगल होती है यार। फॉर मेन, एंड मैं इसमें कोई बिल्कुल वो एक सेक्सिस्ट एंगल नहीं ले रहा, लेकिन आई नो फॉर अ हाँ, ब्राउन मैन, लाइक मैं अपने यहाँ पे, मेरे बहुत अच्छे यहाँ पे दोस्त हैं, वो इंडियंस हैं मोस्टली, यहाँ पे पाकिस्तानी इतने नहीं है, और मैं उनसे भी बात करता हूँ ना, एंड आई कैन रिलेट टू देयर स्ट्रगल ना, कि मतलब यार उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बड़े हुए हैं, वो घर का ओनली सन फैक्टर भी, आई एम एन ओनली सन एज वेल, एंड देन यू आर गोइंग टू सपोज हॉलैंड और टू सपोज समवेयर एल्स, एंड फिर घर पे भी बात हो रही है, घर के भी मसले हैं, एंड उसका भी ओनस आपके ऊपर है, यू आर टॉकिंग होम एंड यू आर लाइक यार आज ना पानी की मोटर खराब हो गई है, आप हॉलैंड में बैठ के ना यार सोच रहे हो यार पानी की मोटर खराब हो गई है, मैं फलां बंदे को हाँ, कॉल करता हूँ, वो फलां बंदा मेरे घर पे भेजेगा और मेरी मोटर ठीक हाँ, करेगा। सो या कुछ मैंने थोड़ा लंबा, सॉरी सॉरी फॉर दैट टायरैंड, नहीं, नहीं, बट या नहीं, आई वाज नहीं, जस्ट ट्राइंग टू, मैं जरा समा बांध रहा था कि हाउ डू आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक yeah, so अच्छा, so there are actually multiple questions in what you just said. I'm आई going to जस्ट केप्ट start ऑन off with गोइंग, answer. सॉरी सॉरी फॉर दैट। नहीं, नहीं, नहीं. So I'm going to answer them. Okay, so है ये कि मुश्किल तो है. To be very honest, it's not just about brown men. It's also about the women as well. क्योंकि उनका भी इस तरह I've known women जो कि पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं. I've known women जो कि अगर बाहर नहीं भी गई तो पाकिस्तान में रहते हुए they have had this struggle कि they are the only child of the house. ठीक है. I think it's more related to being the only child of the house rather than being if you're the son or a daughter. क्योंकि एक automatically एक responsibility सर पे आ जाती है. And even though my parents have never really made me feel कि you know तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो और तुम ही ने मुझे जो है वो संभालना है और तुम ही बाहर जाके मुझे पैसे भेजोगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला. लेकिन मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. ठीक है. दैट्स एंड ट्रू। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ सन जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भाग जाए. बाहर मैं पार्टी कर रहा हूँ, बाहर बाहर पे अपने मजे कर रहा हूँ, मेरा माँ बाप यहाँ पे जो है वो स्टिक पकड़ के या पड़ोसियों के बच्चे से मदद मांग के शॉपर्स लेके ऊपर जा रहे हैं. आई एम रियली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट एट ऑल. Right, this तो is, हाँ, I mean, you can complete it first. Sorry to नहीं, like. नहीं, इफ यू वांट टू से समथिंग तो मुझे बता दो. Yeah, I just want to say something कि हाँ, uh, from my own experience, and I feel like a lot of people from Pakistan, India, or somewhere in the south or studying in the west. When I, especially at the age of 24 25, क्योंकि मैं 18 19 साल की उम्र में तो यहाँ आया नहीं था, मैं 18 19 साल की उम्र में तो लम्स गया था, और लम्स भी चले, दैट वाज माय प्रिविलेज कि मैं लम्स जा सकता था, बट वहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था. यहाँ पे आई मेट अ कपल ऑफ पाकिस्तानीज वो लाइक 19 20 ईयर ओल्ड, वो अभी आए हैं, बैचलर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं, या इंडियंस भी, या कोई भी यहाँ पे 18 19 ओल्ड, एंड इवन इफ दे यूरोपियंस एंड बेस्ट से लोग हैं, द मतलब यू कैन लुक एट देयर फेस कि यार वो कितना फ्री फील करते हैं, सही है, एंड मतलब उनको स्टूडेंट लोन्स मिले हुए हैं, उनकी फीस साल की 1000 यूरो है, उनको महीने का 900 यूरो गवर्नमेंट से मिल जाता है, वो अपनी कोई पार्ट टाइम जॉब शॉप भी कर रहे हैं, वो 500 600 अपना भी कमा लेते हैं, 300 400 रेंट देते हैं, 500 600 पार्टी करते हैं, 200 सेव करते हैं, मतलब ये यहाँ का एक टिपिकल लाइफस्टाइल है, राइट? बिल्कुल सही. when you interact with them and when you just go out with them for dinner or something or drinks or something, तो जब आप उनसे बातें करते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है यार कि आपका चाइल्डहुड कितना, मतलब ऐसे मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्रॉमेटिक, राइट? मतलब ग्रोइंग अप इन कराची, मतलब हमारा 10 बजे अल्ताफ भाई की स्पीच हो रही है, चलो जी घर चले जाओ, मतलब अजीब हाँ, हालात खराब, बॉम्बिंग्स एंड एवरीथिंग, and then when you come here and you expect yourself to be at their level,
dude, this is not possible. आप हम्म, कर ही नहीं सकते. या तो आप पाकिस्तान में किसी महल में रहते हो और आपका अंदर ही हाँ, सिनेमा हो और अंदर ही बार्बर हो और अंदर ही आपका मैकेनिक हो, तब तो ठीक है, जो कि किसी का नहीं मैकेनिक, होता. हाँ, सही है, 0.01% का भी नहीं होता. हाँ, एंड मैंने ये देखा है और मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप वेस्ट में आके अपने आप को ये समझ रहे हो कि बस हम इन्हीं की तरह हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी अप्लाई ही नहीं हो सकती आपके ऊपर. आपकी आपकी अंदर की वायरिंग ही डिफरेंट है. एंड बिल्कुल सही है। या एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके अंदर वो गिल्ट फैक्टर भी आता है, राइट. लाइक अभी मैं यहाँ पर हूँ, इट्स बीन, मैं अभी बीच में पाकिस्तान में भी था, दैट्स ओके. बट कुछ भी होता है ना पाकिस्तान के अंदर, लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक, भाई क्या मसला है, न्यूज़ नहीं देखो. मैं कैसे, मतलब आई कांट से, आई एम अ न्यूज़ जंकी. सही है, मेरी सुबह, मतलब मैं दिन नहीं गुजार सकता अपने विदाउट न्यूज़. सही है, दैट्स समथिंग हम्म, आई एम वेरी मच प्रोन टू, राइट. एंड कुछ भी होता है पाकिस्तान में, मतलब आजकल मेरी ये टेंशन है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ना तमीज से हो. हालांकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, आई एम हाँ, लिटरली स्टडीइंग हियर, मेरे यहाँ पे और 150 मसले चल रहे हैं, लेकिन मुझे आगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ना कुछ कोई मसले ना हो. That's it. मतलब हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. हमारे अंदर वो, हमारे ऊपर वो ओनस जो है ना, हम आइसलैंड भी शिफ्ट हो जाएंगे ना, वो ओनस हमारे ऊपर सारी जिंदगी रहेगी. यू कैन नॉट लाइक डिसइनफ्रेंचाइज योरसेल्फ देखो फ्रॉम. वो इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का कोई 21-22 साल यहाँ पे गुजारा है, 23 साल जो, और हाँ. आपकी उम्र मुश्किल से 24 से 25 साल, हाँ. ठीक है. सो 95-97% ऑफ योर लाइफ हैज बिन स्पेंड इन अ सिटी जहाँ पे शुरू से अपने मसले बसाए थे, हम्म. ठीक है. अल्ताफ भाई का एक जमाना था, हम्म. 2008-9 की बात है, जब बॉम्बिंग्स वगैरह होती थी. अच्छा, ये जब ये हालात बहुत ख़राब थे, दिस वाज बैक इन 2010 टू 14 के टाइम. हमारी पोस्टिंग पेशावर में ही थी, हम्म. एंड देयर वाज दिस वन टाइम जहाँ पे हमारा घर एम्बुश हुआ था. एंड सो द होल स्टोरी वाज, दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग. मेरा जो स्कूल था, ठीक है ना, दैट वाज विद इन द आर्मी का कंपाउंड. हम्म. अच्छा, अब सुबह स्कूल जाने से पहले जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकला हूँ, तो इट वाज अ वॉकिंग डिस्टेंस. तो जब मैं जा रहा हूँ, अब वो जो पीछे चेक पोस्ट थी हमारे पीछे, एक पूरी दीवार थी. दीवार के ऊपर जो है वो 3 चेक पोस्ट है, ठीक है. अब एक आध फायर हो गया, एक आध फायर बैक हो गया, ये नॉर्मल था. हम्म. like ये legitimately normal था for a person who is how old was I was like 14 years old or 13 years old, ठीक है. आप 13 साल मेरे के लिए बच्चे हो यार, नॉर्मल था, हाँ. मेरे लिए नॉर्मल था सुनना कि एक फायर ऊपर चेक पोस्ट से हुआ है, वहां से फ्रेंडली फायर वापस हुआ. फाइन, स्कूल चले गए, क्लासेस ले ली, पार्टी कर ली, वापस आ गए. अब वापस हमारी आदत थी कि हम लोग फुटबॉल खेलते थे. हम जब वापस आए हैं तो फुटबॉल जब खेल रहे थे तो फायरिंग ना थोड़ी ज्यादा होना शुरू हो गई ना. लाइक हम्म. दैट वाज नॉर्मल. वो नॉर्मल नहीं था कि इतनी इतनी रिपीटेडली फायरिंग हो रही है और वहां से आगे रिस्पॉन्स भी आ रहा है. देयर वाज दिस वन गाय ऑफिसर थे वहां पे, कर्नल आरफीन. वो हमारी गेम के बीच में आए, उन्होंने सब बच्चों को बोला कि बेटा आप लोग घर जाओ, हालात ठीक नहीं है, अब तक अपने घरों में जाओ, अभी इस तरह खुले मैदान में ना रहो. ठीक है, ओके, शिट इज गेटिंग सीरियस नाउ. हम लोग फिर गए, मगरिब की अजान हुई, मगरिब की अजान होते ही उन्होंने सायरन बजा दिया, आर्मी वालों ने. अब सायरन का मतलब ये है कि ब्लैकआउट. अब ब्लैकआउट है, और फायरिंग कोई इंतहा की फायरिंग हो रही है ना, मतलब. और जब आपने ब्लैकआउट भी किया हुआ है, टीवी भी ऑफ है, खामोशी से आप बैठे हुए, बीच में मोमबत्ती जल रही है ड्राइंग रूम के, और आप ड्राइंग रूम के आसपास बैठे हुए हैं, और आप सिर्फ दुआएं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह रहे हैं कि ये कब खत्म होगा. दैट्स सो फैसिनेटिंग, राइट. मतलब हमारे एक और जो मुझे यहाँ पे मसला फील होता है कि मेरी पढ़ाई भी थोड़ी अराउंड दिस ही है. लाइक आई एम स्पेशलाइजिंग इन सोशल मीडिया एंड सोसाइटी. हाँ, और यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैं जितना लिटरेचर पढ़ता हूँ जरा वेस्टर्न सेंट्रिक और यूरो सेंट्रिक होता है. हाँ, और हम यहाँ पे अफगान वॉर के बारे में भी पढ़ते हैं और वॉर एंड टेरर के बारे में भी पढ़ते हैं. हाँ, तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट. मेरी अपने बहुत सारे प्रोफेसर से, मतलब पढ़ाई तो चलो चलती रहती है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आई शुड प्रेजेंट देम दी अदर साइड, राइट. लाइक मतलब एक तो मुझे ये होता है कि इंडिया इंडिया के बारे में सबको पता है, राइट. इंडिया इज अ आइडेंटिटी. हम ना यस, 3 में ना 13 में, हमारा ना हम बेसिकली एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है, राइट. क्योंकि हाँ, अब जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर है, राइट. अब I was telling to one of my professors who's an Indian basically who teaches here.
एंड वो नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही थी ना, अमेजॉन प्राइम, और इंडिया का सीन बड़ा ऊपर हो रहा है। मैंने कहा सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है ना, कराची का एक एरिया लियारी, मैं 10 टाइम्स अच्छी गैंग्स ऑफ हाँ वसेपुर बना सकता हूँ लियारी के अंदर, राइट। हाँ कराची की गैंग वॉर्स, कराची का मतलब पूरा सीन, के जी जौहर का फलां इलाका पठानों का है, फलां इलाका, मतलब वो एक पूरा सीन था, राइट। नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, हाँ बट हमारे यहाँ जब आप एक दूसरे से, हमारे यहाँ लोग बात करते हैं ना, तो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू explain people that where you're coming from, even if I meet, मुझे 2-3 दिन पहले कहीं पे कोई बंदा मिला तो कहता है कहाँ से हो, मैंने कहा जी पाकिस्तान से हूँ। कहते हैं यार मैं 25 साल का हूँ, मुझे पाकिस्तान के बारे में सिर्फ एक चीज पता है कि मैं ईबे से ना पाकिस्तान से चीजें मंगाता हूँ। पाकिस्तान क्या है, मतलब मैं मतलब क्या सीन क्या है पाकिस्तान, इंडिया का मुझे पता है, मैं गया ईबे हूँ। से पाकिस्तान से मंगवाते हैं? पता नहीं कुछ उसका ईबे का कोई सप्लायर था जो पाकिस्तान से अच्छा, सोर्सिंग करता था। दैट वाज द ओनली, that's a proud he was moment an for us. he was an I think he was a Dutch and an Irish guy, जिसके हाँ जिसके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक ईबे का सोर्सिंग डेस्टिनेशन थी, राइट। सही है। द फिफ्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाज जस्ट अ सोर्सिंग सप्लाई कंट्री फॉर हिम, राइट। हाँ तो मैंने उसको बताया जी मैं जिस शहर से हूँ ना, वहाँ पे जी 30 मिलियन लोग हैं, सही है। हाँ और उसकी, आई शुड नॉट अब्यूज हियर, बट उसकी तो ना मतलब वो तो पैक हो गई ना उसकी। उसने कहा यार पूरे हॉलैंड की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, और तुम ऐसे शहर से हो जहाँ पे 3-3.5 करोड़ है, वो भी हाँ डॉक्यूमेंटेड, और इधर उधर की पता नहीं हाँ कितने, राइट। एंड बहुत सारे, आई फील बहुत लाइक इट्स सारे, हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक और मसला ये है, आई एम टॉकिंग अ लॉट प्रो कराची, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेशली यूरोप में मैं जहाँ भी गया हूँ, इट्स अ वेरी पंजाबी डोमिनेटेड सीन। मतलब यहाँ पे गुजरांवाला, हाँ सियालकोट, बहावलपुर, मतलब इधर, और मैं खुद भी पंजाबी हूँ, सो आई कैन रिलेट टू देम एज वेल, बट आई हैव ग्रोन अप इन कराची। तो या यहाँ के जो डायस्पोरा भी है ना, उनको भी कराची के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि उनका सीधी बात है कराची से कोई वास्ता ही नहीं है। उनका हाँ अपना जी लाहौर इस्लामाबाद, उनकी पार्टी है लाहौर इस्लामाबाद, राइट। हाँ एंड पंजाबी यहाँ पर, यहाँ का जो पंजाबी डायस्पोरा है ना, मैं अभी वापस आया ना अपनी, मैं अभी सेमेस्टर ब्रेक में कराची गया था ना फॉर लाइक 3-2-3 वीक्स। मैं वापस आया, मुझे कहते हैं फोन शोन तो नहीं छीना। हालांकि ही इज अ पाकिस्तानी गाय, दे लिव हियर, दे आर लाइक हाँ यूरोपियंस, लेकिन उनका या कराची के बारे में परसेप्शन था यार फोन शोन तो नहीं छीना आपका। परसेप्शन एंड सही है वैसे, हाँ। एंड दैट वाज सो ट्रू, राइट, क्योंकि हाँ, मतलब हम, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं, हम कितनी कितनी चीजों से गुजर के पहुंचे हैं। एंड या आई फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, राइट, मतलब। you know, I'm gonna add on to that, क्योंकि since you also mentioned in the introduction कि मैंने वो counter violence वाली हाँ चीज भी की थी, I'm actually gonna connect these two things right now. हाँ Uh, so again, to complete the Bashar wali thing, it wasn't just fighting. Then what happened was कि रात के वक्त the people on the backside, the Taliban actually, they fired rockets on us. RPG-7 के rocket की मैंने आवाज सुनी थी जब वो मेरे अपार्टमेंट के ऊपर से गुजरा था। जैसा कार्टून में आवाज आती है ना कि कोई रॉकेट गुजरे तो एक शू की आवाज आती है, legitimately वैसी आवाज थी। And then वो शू की आवाज आई, and then there was a blast. Then there was another rocket fire, there was a blast, and at that time we were like, it is not safe for us to stay here. We need to leave. Since my father was in the army, और वो अब्बू ने सारी coordination की, अब्बू ने पूरा एक convoy तैयार करवाया, और वहाँ पे वो जो एरिया था, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके हस्बैंड्स केपीके के डिफरेंट एरियाज में पोस्टेड थे। पोस्टेड थे। ठीक है, कोई बाजोड़ में किसी का हस्बैंड जो है वो बाजोड़ में, किसी का हस्बैंड जो है वो तोरखम में, किसी का हस्बैंड जो है वो आपका ABC XYZ साइट्स पे है, उनकी फैमिलीज जहाँ पे हैं। तो इट वाज ऑन अस टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ देम एंड टेक देम विद अस इन द कॉन्वॉय। तो हमने इस तरह 3 फैमिलीज को इकट्ठा किया इंक्लूडिंग आवर्स, एंड वी basically left the place जो हयाताबाद को ले गए थे। We went to Kohat. कोहाट पर हमने रात गुजारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग अबू वाज अप द होल नाइट, एंड उसके बाद जब अबू ने पता करवाया कि क्या हालात हैं पेशावर के, दे वर लाइक हाँ ठीक है, सारा मसला ठंडा हो गया। एंड देन वी केम बैक टू आवर होम। एंड माय मेरे घर पे जो खान साहब जो खाना पकाता है, द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट मी एन RPG-7 का रॉकेट जो कि फटा हुआ था। That was a souvenir for me, and I still have that rocket in my cupboard. I'm actually going to show you इस phone के ऊपर। वो एक फटा हुआ रॉकेट है जो कि मेरे पास पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ है, and it's a reminder कि what have we been through in this lifetime. My father was ambushed almost thrice. उनकी गाड़ी गुजरी है और पीछे धमाका हुआ है, और ये 3 दफा अबू के साथ हो चुका है, राइट। सो दीज आर थिंग्स व्हिच
अभी मैं और आप दूसरे को जानते हैं, बट यू वुड नेवर नो कि दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ आई बीन थ्रू. ठीक है. दिस इज या दिस इज मतलब मुझे भी कभी कभी फील होता है यार, मतलब मैं अभी रिसेंटली जब पेशावर गया था, और ये मेरा थर्ड ट्रिप था, और मैं एक दफ़ा पहले भी पेशावर जा चुका हूँ 2014 या 2015. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पहली दफ़ा जब कारखानों बाजार गया, एंड आई वाज विद समवन हु लाइक इज सम इन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द आर्मी. और मैं गया तो मुझे ना, मैं जब छोटा होता था ना तो मुझे गन्स का बड़ा शौक होता था ना, मतलब वो टर्मिनेटर सही है. वाला मेरी, मतलब टर्मिनेटर, जॉन हाँ. रैम्बो, ये मेरे हाँ. मतलब आइडियल्स है ना. यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ दीस मूवीज विद माय डैड. तो हम्म. मैं जब पहली दफा कारखानों गया ना, तो मैंने वो बच्चे, छोटे छोटे बेचारे पठान बच्चे होते हैं ना, उनके गले में ना मैंने वो नाइट विजन और सॉक्स शॉक्स और वो ग्रीन रंग के, वो मैंने सारा सारा नेटो का सामान सामान होता देखा. है. हाँ. हाँ. तो आई वाज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैंने तो ये सब जीआई जो रिटेलिएशन वगैरह में देखा हुआ है, तो ये सारा मेड अप स्टफ होगा, फैंसी स्टफ होगा. तो हाँ. मैं अंदर गया तो मुझे ना एक एक बंदे ने ना फ्री में ना, मैंने पता नहीं किसी सॉक्स शॉक्स लिए उससे, उन्होंने लॉकेट दे दिया. तो लॉकेट का जो सेंटर पॉइंट था ना, उस पे बुलेट थी. तो मुझे लगा कि नॉर्मल सी बुलेट होगी. मैं खैर हाँ. वापस आ मैं मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था, तो मुझे एएसएफ वालों ने रोका कि सर ये सही है. आपके बैग में है. मैंने कहा जी ये तो लॉकेट है जी, पेशावर से दिया था. कहते हैं सर ये असली गोली है, ये है लॉकेट, ये मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, चले जाए लेकिन ये असली गोली है. और मैंने कहा भाई मैं क्या, मतलब मैंने ओ लेवल्स किया था. 10 हाँ. जून को मेरा एड मैथ का सीआई था, और 12 जून को मैं पेशावर में था. आई स्टिल रिमेंबर दैट. हाँ. 2014 हाँ. 2015, लम से पहले भी नहीं, निक्सर से पहले की बात कर रहा हूँ. मतलब 15-16 साल का बच्चा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था. एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई उस पूरे एनवायरनमेंट में बड़ा होना, और मतलब यहाँ तक पहुंचना, फिर अपनी डिग्रीज कंप्लीट करना, फिर अपनी काम शाम करना या बाहर आना या समथिंग लाइक दैट. एंड आई ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू पीपल फ्रॉम ऑल दीज. I also consider our country also like some sort of conflict ridden. लेकिन मैं कभी हम्म. भी यहाँ पे किसी सीरियन या अफगान या मतलब सोमालिया का तो चलो मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज, मैं उनसे बात करता हूँ ना, अगर वो कोई फजूल की बात भी करते हैं ना, लेकिन आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट यार, क्योंकि वो जंग में बड़े हुए हैं. मतलब बिल्कुल. बिल्कुल. दिस आई हैव दिस वेरी गुड डोनर गाय, राइट. मैं आप डोनर्स बहुत खाता हूँ, तो इज अ सीरियन गाय, राइट. तो मैं उस दिन उसके राइट. पास गया तो मुझे कहता है कि you know how the Imran Khan situation is right there. He might be removed for power and everything. तो मुझे कहता है यार ये उर्दू, he knows उर्दू. तो he's like यार इमरान खान का तो सीन ऑफ लग रहा है. I feel like Zardari is very good for Pakistan ना. ओ Now नो ब्रो. now नहीं he's a नहीं. Syrian guy. नहीं. मतलब नहीं he's a नहीं. Syrian guy. He grew up in Damascus. वो जंग से बेचारा Yeah. भाग शाग के अपनी फैमिली को लेके हॉलैंड आया है, यहाँ पे असाइलम पे हाँ. रह रहे हैं. लेकिन he could also connect to our problems, right. यार इमरान खान का सीन ऑफ है तो ना, he is advising me on what is good for my country. हालांकि अगर मैं चाहता तो मैं उसको बोलता भाई अपने काम से काम रख, डोनर बना घर, लेकिन आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट ना. यार वो बंदा जंग में बड़ा हुआ है, सही है. एंड हम भी जंग में पड़े हुए हैं. आई कंसिडर कि हम भी कह जंग में सकते पड़े हैं. हुए हैं. मतलब टू एन Yeah. एक्सटेंट यस, हम हाँ. मानते नहीं है ये हाँ. बात, हम अपने आप को हाँ. अफगानिस्तान, सीरिया, इराक से दूर रखते हैं. बट हाँ. टू बी रियली ऑनेस्ट, हम जंग में पड़े हुए हैं. वेदर यू अग्री टू दिस और नॉट, दिस इज द रियलिटी, राइट. आप जितनी एम्पिरिकल स्टडीज उठा लो इन टर्म्स ऑफ बॉम्बिंग एंड डेथ्स एंड एवरीथिंग. Yeah. So yeah, this is yeah, हम मतलब इधर से उधर चले गए. But yeah, just for everyone who's listening and who's like my age and who's coming to the West for his masters or bachelors, if you think that you will disenfranchise yourself from your origins, पहली बात that's not possible. And दूसरी बात, I see a lot on Twitter ना कि मतलब मैंने ये Twitter पे बहुत देखा है. मैं आजकल ना मतलब अपनी कोर्स के लिए भी पढ़ रहा था कि जी वो जिना एयरपोर्ट पे ना पासपोर्ट की पिक्चर लगा के ना, आई एम फाइनली लीविंग, विश मी. मतलब यार ओके, दैट्स गुड, यू आर लीविंग, ओके. हाँ. बट गुड फॉर यू. हाँ. जब आप यहाँ आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो जो आपने आई एम फाइनली लीविंग बैठ के कहा था ना जिना एयरपोर्ट पे, दैट वाज योर लास्ट. Before that FIA guy had that exit stamp on you, or before you were having your omelette at the CIP lounge, that was your last ever place, that was your comfort zone. उसके बाद you're on, or you're literally on your own. मतलब आप Yes. जहाज में एक दफा बैठ गए ना, आप दोहा एयरपोर्ट पे ना, आपको कोई ना, मतलब जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, आपको कोई फ्री का पानी भी नहीं कोई ऑफर आपको करेगा. मुंह भी नहीं लगाएगा. हाँ. एग्जैक्टली. एंड दैट्स मैं थोड़ी सा लंबा रैंट कर रहा हूँ, लाइक पार्डन मी, नहीं बट लाइक नहीं. आई यू आपने जो बातें भी बोली हैं ये बिल्कुल आई सही है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मैंने फर्स्ट हैंड भी एक्सपीरियंस किया था. सो लास्ट मंथ
we went to Dubai. ठीक है, और हमारी primary जो attraction थी that was to visit the Expo 2020, and that was my first ever international trip. मैं उससे पहले पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गया था. हाँ, एक दफा गलती से अफगानिस्तान में step in कर लिया था, but I really wouldn't count that an international trip. But that would be पूरी कहानी थी वैसे. So, but yeah, with the passport and with the visa, दुबई पहली दफा गया था मैं. तो मेरा वहाँ पे एक एम था. आई वेंट देयर विद अ सर्टेन एजेंडा तो नहीं कहेंगे, बट एक सर्टेन एम कह लो, ठीक है. मैं अगर ट्राम यूज कर रहा हूँ, मैं अगर बस यूज कर रहा हूँ, मैं अगर वॉक कर रहा हूँ, मैं अगर किसी मॉल में हूँ, आई वुड ट्राई एंड कम्युनिकेट विद पीपल जो कि देसी ना हो, क्योंकि देसी तो वहाँ बहुत है. आई वुड वहाँ रादर तो वांट टू टॉक है विद ही पीपल. देसी, मतलब वहाँ तो बहुत देसी है. हाँ ज्यादातर हाँ तो इंडिया इंडिया से अगर है तो केरला से है. ठीक है, आपका हाँ, आपका मलयालम ये स्पीकिंग बहुत है मलयालम ऐसे। फिल्म बहुत, और बहुत अच्छे लोग भी हैं. मतलब मुझे पाकिस्तानी वहाँ पे कुछ मिले थे, मुझे केरला के बहुत अच्छे लोग मिले थे. केरला के लोग बहुत स्वीट वहाँ होते हैं पे यार, बहुत स्वीट बहुत होते से हैं, लोग बहुत होते हैं. हम्बल होते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे आपका फिर ये फिलीपीन साइड से बहुत सारे थे. तो आई वांटेड टू टॉक टू पीपल जो कि लगते थे कि टूवर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. एंड एक बड़ा एक मिक्स्ड वो होता था reaction. Some people used to be very nice. Some people used to, have a normal reaction to that. हम्म I remember this one guy, जब मैं एक्सपो से वापस घर जा रहा था, तो मैं और मेरी बहन के भी हमने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट देखा. एंड हम लोग फिर अब रात के कोई 11-12 बज रहे थे. हमने वापस जाना था अपने कमरे की तरफ. हम्म और अब चूंकि एक्सपो खत्म, अभी कॉन्सर्ट खत्म हुआ है और एक रश लगा हुआ है लोगों का. हम जब ट्रेन में जब चढ़े हैं तो सिस्टर got a seat to sit. मैं भी उसके साथ बैठ गया. जब हम ट्रेन चलने वाली थी, देयर कम्स दिस ओल्ड गाय, ओल्ड फेलो, जो कि मतलब लेजिटिमेटली इतना बुजुर्ग थे कि उनके एक्सपो के जो नेम टैग था उस पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा सीनियर सिटीजन. मतलब कि एक तो आई कुड सी कि ही इज अ सीनियर सिटीजन. सर पे लगा के घूम रहे थे क्या मतलब सीरियस। उन्होंने मतलब ये एक वेरीफाई करवा लिया कि आई एम अ सीनियर सिटीजन. हम्म तो आई ऑफर्ड हिम पहले बहुत पोलाइटली कि एक्सक्यूज मी, डू यू वांट टू सिट, इट्स फाइन. तो ही हैड अ वेरी अग्रेसिव तो नहीं बोलेंगे, बट वेरी लाइक होता है ना कि एक थोड़ा सा रिफ्यूजिंग स्टेट में कि हम्म आई डोंट वांट योर हेल्प एंड स्टफ लाइक दैट. हम्म लाइक कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हुआ, मुझे क्या जा रहा है. बट देन जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो आई सॉ कि दैट गाय वाज इन विजिबल अनकंफर्ट. सो आई हम्म ऑफर्ड हिम अगेन. आई एक्चुअली स्टूड अप. आई सेड कि एक्सक्यूज मी, प्लीज हैव अ सीट, आई एम फाइन विद स्टैंडिंग अप. Then he हम्म sat down, and then we had a discussion for the next 45 minutes. हम्म That guy was from the UK. He used to work in a wine factory, and he was 84 years old. He had come to export with a friend of his, and पता नहीं क्या क्या हमारी बात हुई. ठीक है, तो that was one interaction जो कि पहले बुरा था, अच्छा हो गया. I met this Iranian family. So ये जो particular example दे रहा हूँ, I absolutely love this particular example. My dad was sitting down in the metro. I was standing up और मैंने ना वो rail से अपना ना हाथ पकड़ा हुआ था. In front of me there was this woman, probably in her 50s, a guy probably in his 70s or 80s, and then two young boys standing right next to me. Suddenly what I see is कि जो uncle थे, who was 70 or 80 years old, he starts crying. And so जो auntie थी, she starts to console the guy, and like वो खुद भी रोना शुरू हो गई and वो console भी कर रही है. अब ये सब मेरे सामने हो रहा है, like मैं यूं खड़ा हूँ, मेरे सामने सारा हो रहा है. So I asked the guy standing next to me, मैंने बोला कि is everything okay? Can I help you with something? So he says कि जो है वो अपना his father just passed away. अच्छा, I was like, so the guy over there is, अब मैंने अपने उसको नहीं बोला, मैं खुद ही सोच रहा हूँ. Like he looks 70 or 80 years old. His father must have been so old. And कहते हैं, so he passed away. I'm like, oh, I'm so sorry to hear that. And फिर उसके बाद जब बात बढ़ी तो I asked him कि where are you guys from? तो कहते हैं, we from Iran. I'm like, that's pretty cool. So, personal question, please don't mind. You're from Iran. Are you a Muslim? Kata, yes, Alhamdulillah, I'm a Muslim. Then I said, oh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
So for a second, he just kind of stopped now. कहते, could you come again, please? मैंने बोला, इन्नरे लाए बंदे राजियून. And then he had a smile on his face. And I'm like, yes, brother, इन्नरे लाए बंदे राजियून. And then his mother over there, she could not understand English at all. But then he said something to her in their native language. पर्शियन फारसी And में बोला होगा, हाँ. Persian. And then she also had this smile. And then she looked at me and said, इन्नरे लाए बंदे राजियून. And at that time, I figured out that completely different backgrounds, completely different everything. But what was the common factor? It was religion that It was basically religion. I connected think the both of us. this is very important. So I when I like it's been like 6 months now. So my go-to meals are doner and durum places. So they are like Turkish, Egyptian, Syrian, Moroccan. मतलब ये जितने भी मतलब Arab world से बनाते हैं donors. So whenever I go to them ना, हालांकि कोई हमारा ताल्लुक नहीं है in terms of language, in terms of culture and everything. लेकिन वो एक चीज होती है, मतलब किसी इजिप्शियन के पास चले जाओ ना तो पीछे कोई अरबी गाने लगे हुए होते हैं, उसने अपना माहौल बनाया हुआ Oh, होता है. टर्किश के पास चले जाओ तो उसने अंतालिया और इस्तांबुल की तस्वीरें लगाई हुई होती हैं. एंड आई जस्ट वांट मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ. सो आई वर्क एज अ पार्ट टाइम डिलीवरी एज अ कोरियर, फूड कोरियर. तो मैं एक दफा एक रेस्टोरेंट में गया तो उस रेस्टोरेंट, वो एक इरानियन रेस्टोरेंट था. तो मैं जब एंटर हुआ ना तो उन्होंने ना शाह ऑफ ईरान की तस्वीरें लगाई हुई थी. तो मुझे समझ आ गई कि ये वो फैमिली है जो 70s में रेवोल्यूशन से पहले निकल लिए और ये शाह के लॉयलिस्ट है ना, क्योंकि शाह द रिजीम वाज ओवरथ्रोन इन द 79. तो मैं समझ गया इरानियन है. तो मैं अंदर गया तो मैं बैठ के अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ. तो एक आंटी मेरे पास आई, कहती हैं कि बेटा आपको मैं यहाँ पहली, मतलब उसने अपनी इंग्लिश में बोला कि मैंने पहली दफा देखा है आप तो यहाँ पे. तो मैंने कहा मैंने आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग. कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ. तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान बोला ना, वो आंटी वापस गई. आई एम वेटिंग फॉर द फूड. मेरी तरह के 5 अदर कुरियर्स भी हैं जो खाने का वेट कर रहे हैं. उन्होंने मुझे कावा और ड्राई फ्रूट ला के दिया है और उन्होंने कहा बैठ के ना सुकून से लो, मतलब यूर ब्रदर इन. मतलब वो एक वाइब है लाइक ना, मतलब आप इरानियंस ठीक है आपसे बहुत डिफरेंट है. अफगान, आई रिमेम्बर मैंने अपने फोन का प्रोटेक्टर में चढ़वाने गया तो बंदे ने मुझे देखा, वो गोरा सा बंदा था तो मुझे लगा कोई अरब होगा. तो कहता है कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ. तो कहता है मैं अफगान हूँ और मैं ड्यूरिंग 90s इस्लामाबाद में एज ए रेफ्यूजी रहा हूँ और फिर मैं इस्लामाबाद से यहाँ हॉलैंड आया हूँ. मतलब मेरी असाइलम एप्लीकेशन पाकिस्तान से प्रोसेस हुई थी. तो ये प्रोटेक्टर रखो, मैं पैसे नहीं ले रहा आपसे. और मैंने मतलब मैंने यही कहा यार, मतलब बेचारा जंग से गुजर कर इस मुल्क में आया है अपनी फैमिली के साथ. और 15-20 यूरो मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है फॉर समवन लाइक दैट. दुकान लगाई हुई है उसने अपनी और इसने मुझे प्रोटेक्टर के पैसे नहीं लिए. So these interactions and these things are very important. And पता है exactly. एक और चीज मैं बताऊं, it's not only our part of the world. अगर आप किसी भी छोटे मुल्क के बंदे से बात करोगे ना, जो यूके, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, द यूएस में, ये जो फेयरली मतलब द पावरफुल साइड ऑफ द वर्ल्ड है ना, आपको ना एक अलग हम्बलनेस फील होती है बंदे के अंदर. सही है. आप मोल्डोवा इज अ यूरोपियन कंट्री, इतना सा चुन्नू सा मुल्क है, लेकिन वो बंदा हम्बल. रोमेनिया, मोल्डोवा, अफ्रीका की कंट्रीज, यहाँ पे जो विलेज से लोग, मतलब जो जो गरीब कंट्रीज के लोग होते हैं ना, उनके अंदर ना एक हम्बलनेस होती है. क्योंकि उनको मतलब अकड़ नहीं है ना उनकी. एक तो अकड़ नहीं होती. अकड़ भी चलो कुछ लोगों में होती होगी, वी कैन नॉट जज देम फॉर दैट. बट रिसेंटली आई मूव्ड इनटू अ प्लेस हु समवन एल्स वाज लिविंग हियर. तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी तो मैंने मार्केट प्लेस पे लगा दी. तो दिस गर्ल केम टू बाय दीस प्लेसेस ना, और वो इरास्मस स्कॉलर थी. है मैंने कहा आप कहाँ से? सुना मैं घाना से हूँ और मैंने यहाँ पे अपना मास्टर्स किया और अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ. मैं उतरेक में रहती हूँ. एंड हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूर दूर तक हमारा और खाना का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक कॉमन थीम है, हम दोनों गरीब मुल्कों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बड़ा इसको वो समझा जाता है कि अफ्रीकन हमसे नीचे हैं. कोई नीचे नीचे नहीं है. इनफैक्ट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन देयर लाइफ एज अपोज टू अस. एंड आई इमीडिएटली कनेक्टेड विद हर. मैंने कहा यार आपने मास्टर्स किया, आप यहाँ पे काम कर रही हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एंड वी टॉक्ड फॉर लाइक नेक्स्ट 30 मिनट्स. वो चीज लेने आई थी और वो 2 चीजें और लेके चली गई कि भाई तू स्टूडेंट है, मैं काम कर रही हूँ, तुझे पैसों की जरूरत है, मैं ये भी तुझसे खरीद लेती हूँ. इट्स फॉर सेल, राइट. एंड दैट वाज इट. मैंने कहा दैट इज वेयर ह्यूमैनिटी लाइक कम्स टुगेदर, राइट. मतलब कितना डिफरेंट है. शरिया, the thing is कि हम लोग ना लोगों से बात नहीं करते. एग्जैक्टली. हम लोग इंटरनली चीजों को
इमेजिन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, पूरी कहानी दिमाग में बनाई हुई होती है, ठीक है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से बनती हैं, एक पूरा एक फॉल्स परसेप्शन बन जाता है। आई थिंक कि कम्युनिकेशन इज समथिंग जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है। आप बात करो, मुश्किल से क्या होगा, वो आपको आगे से मना कर देगा या आपको आगे से जवाब नहीं देगा, आपका क्या ज़ाहिर है, ठीक है, आप बात करो। यू कैन आइदर completely break off the deal, या you can actually end up having some really really good friends, ठीक है, आप बात करो। और दूसरी बात है कि जब अपना हम्बलनेस की जो आप बात करें ना, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन से ही बहुत सारा कुछ अवेलेबल होता था, बहुत सारा नवाजा था उनको, वो कहते हैं ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। आई वॉजंट वन ऑफ दैट, ठीक है, मैंने अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके मैं पैदा नहीं हुआ था। माई पेरेंट्स हैड टू वर्क रियली हार्ड, आई हैड टू वर्क रियली हार्ड, देयर मल्टीपल डिसीजंस जहाँ पे हमें कुछ सैक्रिफाइस करने पड़े थे इन ऑर्डर टू गो फॉर द बिगर पिक्चर। तो आई थिंक मैंने मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह सिखाया है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ना आपको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपका आई पर्सनली थिंक जब अपना एवरीबडी ऑन दिस प्लानट ऑन अर्थ विल डाई वन डे, ठीक है, तो Definitely, yeah. अकड़ अकड़ का क्या फायदा है? Exactly, right? मतलब There's it's no point of that. it's so true and to be honest मैं मतलब यहाँ पे ना लाइक एक एक और चीज मैंने देखी है कि आई डोंट नो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, कभी नॉर्थ अमेरिका नहीं गया और मैं कभी यूके भी नहीं गया, बट एटलीस्ट मैंने यूरोपियंस की एक चीज देखी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। आपकी शक्ल नहीं पसंद तो नहीं पसंद, जाओ भाड़ में सही से। बात, एंड सही है, हाँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब कोई कि जी वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, उसने लाल शर्ट पहनी हुई है, पीली, कोई सीन ही नहीं है, राइट? आपकी शक्ल नहीं पसंद, नहीं पसंद, जस्ट डोंट टॉक टू मी है। हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल, जो ये इतना मुझे मजे का एटीट्यूड लगता है। एंड द अदर डे आई वाज टॉकिंग होम एंड नहीं होम नहीं, कहीं किसी दोस्त से बात कर रहा था, पता नहीं ओके सो आई मेट अ डच पर्सन एंड ही वाज लाइक यार तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कल्चर शॉक क्या था ना, तुम पाकिस्तान हाँ, से हो यार, कहाँ मतलब पाकिस्तान कहाँ, कहना नहीं चाहिए बट ही वाज राइट, राइट, मतलब वर्ल्ड अपार्ट, राइट। मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चर शॉक था, जो शायद नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं होता, मैं आई ग्रोन अप वाचिंग हॉलीवुड, कि यहाँ पे लोग अपने पर्दे बंद नहीं करते। सही है, सो आई हैव अ कर्टन अच्छा, इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ, सो यहाँ पे पर्दे खुले होते हैं, नॉट इवन इन डे टाइम फॉर सनलाइट, रात में भी। I go नहीं यार, I go to houses to deliver food, हाँ, right? बंदा अंदर नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहा है, डेजर्ट में उसने टेबल पे क्या रखा हुआ है, उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, वो अभी कैबिनेट से निकाल, आई कैन सी एवरीथिंग। सही है। वाह, एंड अच्छा। मैंने एक दो यहाँ के लोकल से ना पूछा कि भाई इसके पीछे क्या सीन है, ये तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। हाँ, या देखो, if someone else is peeping into our window ना, या, that's his problem, that's not my problem। एंड मैंने ओके, कहा यार, मतलब नेशन, अगर आपने एक नेशन की प्रोग्रेस देखनी है ना, तो आप ये देखो कि इस नेशन का बंदा इतना इमेंसिपेटेड फील करता है कि पर्दे खोल के बैठा हुआ है कि भाई देखना है देखो, आई डोंट गिव अ फक, मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, या अंदर बैठ के मैं कोकेन कर रहा हूँ ना, तब यार मुझे मैं आके जो बोलो। कुछ भी करूँ, इट्स माय it's लाइफ, और इट्स I माय हाउस, या। I met people from Ireland, from England, from the US, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ भी ये नहीं होता भाई, ये हमारे यहाँ भी नहीं होता, पर्दे हर कोई बंद रखता है। एंड दिस मतलब यहाँ पे और बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे हाँ, लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये जो चीज थी ना, हालांकि ये लोग इतना नोटिस नहीं करते। आई यूजली, अब तो खैर धूप बड़े मजे की निकल आती है, तो समर्स आ रही है, बट मैं रात में रनिंग करने जाता हूँ अकेले, बिल्कुल ना, रात के हाँ, 12-1 बजे। और रात के 12-1 बजे दिसंबर में लॉकडाउन लगा हुआ था एंड क्रिसमस का टाइम था, एंड सबके पर्दे खुले हुए हैं, अंदर कोई केक खा रहा है, किसी का बच्चा रो रहा है, कोई पता नहीं राइट लेफ्ट इधर उधर हरकतें कर रहा है। एंड मैंने फील किया यार, मैंने कहा मतलब दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लिबरेशन ना, कि मैं अंदर अपने घर में नंगा भी घूम रहा हूँ ना, तो अगर मुझे कोई और देख रहा है ना, उसकी गलती है, मेरी दैट्स हिज गलती नहीं प्रॉब्लम, है। हाँ, या, एंड मेरा लाइक स्टडीज एंड एवरीथिंग अपार्ट, आई डोंट लाइक आई माइट नॉट लिव हियर इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन मेरा ना वर्ल्ड व्यू जो है ना बदल गया यार। मैंने कहा यार मतलब दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू लुक एट, राइट? मतलब वैसे शेरी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? यार इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे पास क्योंकि आजकल अकेला टाइम बहुत होता है, मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में। हाँ, बट
even if people who are watching who are coming to Europe or the UK in this year or next year, I would certainly after my masters उसमें भी अभी एक साल है, I really want to do a PhD. I really want to be an academic and मुझे एक particular field है मेरी like communications and political communications की तरफ मुझे करना है. But that requires a lot of time. 3-4 साल का Yeah. game है. But if I get Mm. it, like if I get any, अगर मुझे एक paid opportunity मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे for anyone listening in the Netherlands as a PhD you're not a student, you're an employee. आपको सैलरी मिलती है, हॉलीडेज मिलती हैं, सारा इस तरह का सीन होता है. I don't know that, and if I end up doing that, then I want to go back and I want to teach at Lux. It's a very specific, straightforward dream, but I don't want to live here in the long term. uh, there's another reason to it as well. I'm not sure about that, but Canada, UK में जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो they have that option of dual nationality and everything, right? Yes. So Yes. in the Netherlands, if you become a Dutch citizen after you're staying, Uh, like if you stay here for 5 years, you apply, you become a Dutch citizen, you have to give up your Pakistani passport. And that yeah. is something जिसके बारे में I'm still very क्या कहते हैं, rather say like I don't know, I'm not clear about that. Because Confused. for me, yeah, because for me, I really want to have the right to vote for the rest of my life, and I Hmm. do not, I don't want to give up on my right to vote, right? And I don't know, मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं मतलब flow में चले जा रहा हूँ. For me right now it's just like financial liberation, क्योंकि I'm trying my best कि मैं इस साल के बाद घर से पैसे ना लूँ at least. अभी भी मैं like यहाँ पे आप जितना मर्जी काम कर लो, you're not allowed to work that much, but आप to be very honest आप नहीं कर सकते, आपको लेने पड़ते हैं घर से पैसे. So I don't know. Let's see. देखते हैं. Like I feel like a lot of people think about all of this, and everyone has their own sort of very एक micro reality होती है ना हर किसी की. मतलब you never know. यहाँ से पढ़ लिख के 5 साल बाद आप किसी पंजाब के गांव में जाके खेती बाड़ी शुरू कर दो. There's no guarantee, right? मतलब everyone can do कुछ that, कुछ right? भी Like हो सकता है यार, आप कुछ आप भी हो कुछ सकता है. आप कुछ भी कर दो. Yeah. आप I don't know, आप पता नहीं साउथ अमेरिका में जाके पता नहीं कोई भेड़ बकरियों के साथ कुछ, मतलब it's very fluid, right? मतलब it's not थोड़ी सी distortion आ रही है. I think मेरे मेरे पास से आ रही है. I'm not sure. नहीं नहीं. I think एक फोन कॉल आ रहा था तो उसको मैंने भी काटा है यार. अच्छा अच्छा अच्छा. वो मैक और आईफोन कनेक्टेड होते हैं तो वो इसलिए वो हाँ कॉल हाँ आते हाँ रहते वो. हाँ, सही है सही है सही है सही है सही है. Yeah. Yeah, Yeah. that's pretty much it. And not to break it to you, but I think we're almost at like 1 hour 15 minute mark or something. मतलब हमारी बातें शुरू कहाँ से हुई थी? And yeah, like I think थोड़ी सी और distortion है. So Yeah, नहीं नहीं, अब एक और कॉल आ रही थी, आई कर इट अगेन. yeah. सो बस यही है कि जब अपना जस्ट टू, क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट कहीं से किया था हाँ and we हाँ complete went to हाँ. completely different That's the horizon. art of conversation, right? आप शुरू uh, करो और कर लो. so I mean, whoever is gonna watch this episode and जो भी, there's one message that I would want to give through your platform to everybody who's watching this. um, you know अभी हम लोग, मैं how old am I? I'm 25 years old. ठीक है. बहुत कोई बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन what I think इसके जब अपनी जो गुजरे पिछले 5 6 7 साल जो गुजरे हैं, basically the day you start your O levels, all the way till you are done with your bachelor's, ये काफ़ी एक मुश्किल टाइम होता है. True. And ठीक है, and I just want to say कि जब अपना things always do not work out the way you have planned. ठीक है. When I was a kid, I wanted to join the merchant navy. I was a die-hard fan कि मुझे ना merchant navy में जाना ही जाना है, मुझे तो 8 महीने समंदर में गुजारने ही गुजारने. नहीं हुआ ऐसा. ठीक है. फिर मैं ओ लेवल्स करने के बाद मेरा था मुझे लाइसेंस जाना ही जाना है. मैंने नहीं किया. नहीं लाइसेंस हो के रहा है. बाद मैंने That's बोला true. मुझे मुझे जीआईके जाना ही जाना है. मैंने नहीं गया जीआईके. मैं कब, मुझे नफरत थी. मुझे मतलब वो कहता है ना कि मुझे, देयर वाज दिस वन यूनिवर्सिटी का नाम जो मैंने अलग से लिखा हुआ था पेपर के ऊपर कि मेरे यहाँ पे नहीं जाना, और वो एनईडी था. और And मैं you and वहीं you गया. ended up in NED, right? मतलब who I would have ended who up in would have thought? NED. मैंने
4 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग करके निकाल दिए, ठीक है, मुझे नहीं जाना था। ग्रेजुएशन से पहले ग्रेजुएशन से पहले ही आई गॉट अ फुल टाइम जॉब एंड दैट्स वेयर यू एंड आई मेट, यूएस मोबिल के अंदर। बिफोर आई जॉइंड यूएस मोबिल आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आईसेक, क्योंकि मुझे एक सर्टेन लाइफस्टाइल था जो मुझे डेवलप करना था। वो लाइफस्टाइल मुझे एनडी में बिल्कुल नहीं मिल सकता था, वो लाइफस्टाइल मुझे आईसेक से ही मिला। That's true. दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, Networking ठीक and है, everything, right? नेटवर्किंग करना। मुझे ऑनेस्टली बोलना ही आईसेक ने सिखाया। अगर आज मैं कोई 4 चीजें बेच सकता हूँ, अगर आज मैं 4 जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, एमओयू साइन कर सकता हूँ, तो वो मुझे आईसेक ने सिखाया था, वरना मुझे एनडी में रहते हुए कुछ नहीं पता था। ठीक है, True. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपने आप को किसी एक चीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करो। आप अपने आप को डिफरेंट एवेन्यूज पे एक्सप्लोर करते रहो। एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे अम्मी अबू, माय मॉम वाज अ डॉक्टर, माय डैड वाज इन द आर्मी एंड ही वाज आल्सो एन इंजीनियर, ठीक है। उनका तो स्ट्रेट अवे वो था कि मेरा बेटा है तो वो इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी है तो वो डॉक्टर बनेगी। टू सम एक्सटेंट दैट्स फाइन, लेकिन आई थिंक इट्स अ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन कि अम्मा अब्बा जो कह रहे हैं वो तो ठीक है कह रहे हैं, उनकी बात भी रखो, लेकिन अपने एंड टू भी एक्सप्लोर करो। That's ठीक true. है, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। मुझे गाड़ियों का शौक था, अभी भी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई in 2021 I invested in some really nice camera setup and all, and You're a I fellow actually YouTuber. I know that. I totally I missed out on that point. I had to talk about it. and I Okay, sta- we can do a I started follow-up my own episode YouTube about channel. your YouTube journey. Yeah. आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने एक नया पर्सपेक्टिव लाया कि पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइव को मैं कवर करूँगा। इन पाकिस्तान देयर आर मल्टीपल चैनल्स जहाँ पर गाड़ियों के रिव्यू हो रहे हैं। नोबडी रियली कवर्ड द पॉइंट ऑफ व्यू GoPro एक्शन ऑफ द कार। वो एक बहुत स्मॉल नीश है, लेकिन मैंने उसको टारगेट किया और मैं उस पर स्टार्ट हो गया। एंड वो यूट्यूब में करता रहा एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि I I got in touch with this startup, ओके कर, ठीक है। एंड वहाँ पे जो ग्रोथ का जो उस वक्त हेड था, उससे मैंने बात की। he called me up for an interview at his office. This all happened during my stay at US Mobile. एंड उनको मैंने सारा बताया इस तरह से कि भाई ये है मेरा मास्टर्स का सीन बन रहा है इटली का, मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ये लिमिटेशंस हैं, ये कंफ्यूजन्स हैं, एवरीथिंग। he saw my profile, he saw everything, and then he legitimately gave me an offer the same day. कहते कि I understand whatever you're going through, you have a full-time job, you're earning 4 times of what we're going to offer you, ठीक है, I understand. If you do join us, what we can promise you is that we can make you a partner, we can give you equity stock options, this is going to be your take-home salary, once we raise the funding, आपकी salary हम यहाँ से यहाँ पे कर देंगे, and we want you to be the face of OKCard. And at that time मैं यही सोच रहा था कि if I had not started a YouTube channel, if I had not joined ISEC back in university when my parents were staunchly against the idea of me being an ISEC, ठीक है, if I had not done that, I might have not been here. I In this might position, in you this and I position. might not I have been talking, and exactly hundreds of other people might not watch us after this. So it's all exactly a let's say, yeah, the मैं हर किसी को यही कहता हूँ यहाँ पे मुझसे कोई a lot of people here don't know a lot about our religion and our culture and everything, right? मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग usually, मतलब I won't say, but they don't have a lot of, even I am not a very religious person, लेकिन एक चीज मैं हर किसी को कहता हूँ that the power of the universe ना, मतलब वो एक How I Met Your Mother का मुझे बड़ा favorite scene लगता है कि the universe has its own way of connecting people, of making you like you are here for a reason, right? मतलब मैं बिल्कुल और आप अभी बिल्कुल एक रैशनल के पीछे बात कर रहे हैं, मतलब हर चीज के बिल्कुल पीछे कोई ना कोई मसलियत है, and that's very true क्योंकि I just want to end this. We're almost at like the 1 hour 20-25 minute mark, and I was just like end this. wow हाँ, yeah मतलब हमने कोई एक सवा घंटा बात कर ली है, and we were talking uh, about this earlier as when we were setting up this thing, yeah and like a few weeks ago, one night I was talking to one of my other friends, and he might start his masters in the UK, and we were doing the costing and everything. वो typical middle class mentality होती है ना, फलां जगह इतना बिल्कुल सही खर्चा, है फलां हाँ जगह इतना खर्चा, तो हाँ and
And after that call, I came back to my desk and I like मैंने अपनी थोड़ी costing शुरू करी. मैंने कहा यार वो 1 डेढ़ साल का मास्टर्स कर रहा है, मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 ढाई साल रहना है और कॉस्टिंग तो सेम आ रही है. मतलब डिड आई मेक अ बैड डिसीजन? मुझे तो फिर Yeah. लंदन में होना चाहिए था and all that. And the next morning I woke up and I got a very let's say an email I was expecting for the last 6 months. That was some sort of a benefit, एक incentive था. And Mm. I was like नहीं यार मैं कल. And I called my dad. पाकिस्तान में रात के 4 बज रहे थे. और मैंने अब्बा को फोन कर दिया. मैंने कहा यार वो मैं फलां जगह से बंदे से बात कर रहा था और वो तो कॉस्टिंग हमने करी तो मेरा आने का डिसीजन ठीक था. अब फॉर समवन लाइक मी मेरे डैड भी बोल रहे होंगे भाई तुझे 8 महीने हो गए ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं अब हो गया जो. लेकिन नहीं डैड वाज लाइक नहीं भाई देखो ये चीज थी हमने ये डिसीजन इस तरह लिया हमने ये मैथ करी. एंड आई वोक अप एंड आई गॉट दैट ईमेल एंड दैट वाज ए ग्रांट आई हैड अप्लाइड फॉर 6 months ago and I was like यार मतलब ये मुझे आज ही आनी थी जिस दिन मैंने 6 घंटे पहले अब्बू को पाकिस्तान में 4 बजे रात की कॉल करी है. एंड इट्स अ वेरी कंटिन्यूम ऑफ थिंग्स राइट. एंड yeah, some days you feel like shit, some days you feel like यार मैं तो पता नहीं कौन सी जंग लड़कर आ रहा हूँ. And some days you feel like बिल्कुल. yeah it's बिल्कुल. very yeah it's very fluid. But yes, thank you so much Adil. It Most was welcome. a मतलब बड़ा different experience था. I'm recording this after a long time and that's why it's like conversations like these जिससे मैं कहता हूँ मैं करता रहूँ. Making money and everything is a part but these conversations help a lot of people. हमें देख के अगर कल को कोई बंदा इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ जाएगा या अपना स्टार्टअप शुरू करेगा या अपनी फजूल की नौकरी को गालियां दे रहा होगा तो कहेगा नहीं यार आई कैन ऑल्सो एंड अप somewhere in the near future. But yeah, बिल्कुल. this was great. This was yeah, Before sure. we Before signing end off, yeah. before we end the podcast, I just want to say that whatever you're doing right now is truly exceptional. ठीक है. Your effort towards building a brand image for yourself and your effort towards talking about things and talking to people about multiple topics with different topics. ठीक है. It doesn't just help the viewers. मतलब इस podcast को जितने लोग भी देखेंगे सिर्फ उनको help नहीं कर रहा. I think it's a learning ground for you and me as well. क्योंकि Mm, जब आप मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करते हो जब मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हमारी अपनी इतनी लर्निंग होती है कि हम पे उस लर्निंग की बेसिस पे ही आगे फिर अपने आप को डेवलप करते हैं. that's ठीक है. true. एंड ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आई सेड वन थिंग कि वी ऑल आर गोना डाई वन डे. Mm, इसीलिए आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज टू टॉक, mm. कम्युनिकेट. अपने अंदर कोई बात नहीं रखो. So, I mean, I wish you the best of luck for Thank everything you. that you're Thank you up so for. much. Thank you. And I really hope to see you soon in Pakistan, or I hope to see you soon wherever In I'm going for my masters. somewhere, yes, inshallah. I'm going to keep that a surprise. I'm Yeah, going to keep yeah, that discreet. That yeah, is something coming up, inshallah ta'ala. yeah. But मुझे याद है बैक इन यूएस पीपल वी यूज्ड टू जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे मेट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे थे यू वर अप्लाइंग फॉर योर नेदरलैंड्स. Mhm. अब मैंने कहा था कि हम न्यू ईयर पे मिलेंगे जर्मनी के अंदर. Exactly. I still remember that. I do remember that, and I do, and I feel like khair ho gayi. We can definitely meet. I think the location doesn't matter. It's the vibe of it's the vibe of that place. But thank you so much for listening, guys. I'm just gonna end this right now. And before I end, I just want to say that now you can also look up Shahriyar's voice on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts as well. My distribution is finally up and running. So that's that. And thank you so much for listening. And yeah, bye bye. Take care.